दिस गर्ल दुर्गा जी, जो लोकल ट्रेन में गाना गाती है, और छीछा लेदर के लिए हमने बहुत सारे लोगों को ट्राई किया, फाइनली उसकी वॉइस सबसे करेक्ट वर्क की। बीच में 8-10 साल का सल्क था हमारे बीच में, 8-10 साल हमने बात ही नहीं की थी, बच्चों की तरह रूठे हुए थे हम लोग। आमिर एंड मी आर सॉर्टेड एंड क्लियर अमंगस्ट ईच अदर, इट डजंट मैटर व्हाट एनीबॉडी राइट्स। लोहा लोहे के काटता है, शोले का डायलॉग है। लोहा लोहे को लोहा लोहे को काटता है, शोले का डायलॉग इनफैक्ट। Part 1 had 60 years of story. Right. Part 2 is 5 years of story. Hi, I am Anurag Kashyap and you're watching me on Bollywood Hungama. Okay, people like जमील खान एंड पीयूष मिश्रा, समवेयर मे बी बहुत तारीफें हो रही हैं हर किसी की, लेकिन आई थिंक समवेयर उन लोगों के बारे में इतना जिक्र ऐसा नहीं। आई थिंक जमील खान इज अ वेरी फाइन जिक्र करना आप लोगों का काम है ना। राइट, मैं तो उनको काम देता हूँ क्योंकि अच्छे एक्टर्स हैं। लोग कैरिड अवे होते हैं, सिर्फ लोग कैरिड अवे होते हैं सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ, लोग भूल जाते हैं बाकी सारे लोगों का काम। तो उनका जिक्र करना आप लोगों का काम है, आप लोग नहीं करोगे फिर मुझसे पूछोगे उनका जिक्र। टेल अस अबाउट जमील खान, पीयूष मिश्रा। जमील खान इज अ टेरिफिक एक्टर, जमील खान इज अ टेरिफिक एक्टर। आई हैव नोन हिम फ्रॉम द डेज ऑफ स्टेज। फिल्म में बाकी तो ने जो किया वो देखने लायक है, उनको थिएटर के ज़माने से जानता हूँ, बहुत साल से साथ में काम करना था। पीयूष भाई को तो मैं गुरु ही मानता हूँ, वो तो बुलडोज करके हर जगह घुस जाते हैं, उनको तो फिल्म में कास्ट करना भी नहीं पड़ता, अपने आप आ जाते हैं, मैं हूँ। In fact, one more question I had, that छीछा लेदर जो गाना है, apparently it's been in the voice of some 12-year-old boy and this girl दुर्गा जी, जो आंध्र प्रदेश की है, जो लोकल ट्रेन में गाना गाती है। And it was recorded somewhere outside only. It's not recorded in a studio. It's recorded in a studio. It was recorded in Sneha's house. Okay, but not a proper studio. No. Right. But most of the songs are recorded like that. Even Woman is recorded like that. Right. So Sneha की फाइंड है वो, स्नेहा ने ही उसको ढूंढा। दुर्गा नाम है उनका। दुर्गा नाम है। स्नेहा ने ही ढूंढा, स्नेहा ने पहले भी उसके साथ काम किया। ये पहला गाना नहीं है उसका, छीछा लेदर, उसने शायद पहले भी गाना गाया है। और छीछा लेदर के लिए हमने बहुत सारे लोगों को ट्राई किया, फाइनली उसकी वॉइस सबसे करेक्ट वर्क की। I think Mura is a very nice song. In fact, apparently Manoj Bajpayee, he had recommended you Otto Narayan film to Ram Gopal Verma. Yes. And that's how you got Satya, in fact. Yes. So this is your way of paying him back, because the way Manoj Bajpayee is right now, you know, he's got a phenomenal response for the film, and in a way things have come full circle in a way. I hope so, yeah. I hope, yes, between us, yes, it has come a full circle. बीच में 8-10 साल का सल्क था हमारे बीच में, 8-10 साल हमने बात ही नहीं की थी, बच्चों की तरह रूठे हुए थे हम लोग। मोहब्बत की एक वो भी निशानी है। हाँ, नहीं मतलब ठीक है, हम लोग बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ी जब रियलाइज़ हुई तो उसके बाद हम लोग ने गलती सुधार ली, मैंने सुधारी। And when are you starting Bombay Velvet? What is the latest? Bombay Velvet next year अप्रैल में शुरू होगी। That will start. And when is it releasing, in fact? यार अभी मैं पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम लेता हूँ। Okay. तो फिल्म इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ सीजी वर्क, हेवी सीजी वर्क, सो काफ़ी टाइम लगेगा। 2012 में शुरू होगी अप्रैल में शूटिंग, 2013 में ही रिलीज़ होगी। 2013 में शूटिंग शुरू होगी, 2014 में ही रिलीज होगी। What are your plans for Gangs of Wasseypur for international market? What are you doing for that? Gangs of Wasseypur is being sold एल ड्राइवर के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट। काफ़ी सारी कंट्रीज लॉक हो गई हैं। 20 तारीख को सिंगापुर रिलीज़ है, 26 को फ्रांस रिलीज़ है, और ये रिलीजेस चलते रहेंगे अगले साल मार्च तक लगातार। And what are your hopes from the international release? Because this sort of movie and the music and all, we have got incredible amounts of MG which I can't disclose. MG is minimum guaranteed. Yeah, which I cannot disclose, which is why you see the smiles on our faces that we are home. Right. And it will be the biggest release any Indian film has seen ever world over. Great. It will release in every single country. Right. Over a period of time, over 1 year. Right. And second part of Gangs of Wasseypur, are you promising more entertainment? Second part of Gangs of Wasseypur is 10 times more entertainment. हम लोग तो 10 part times 1 more से डरे entertainment. हुए थे because part 1 had documentary, part 1 had context, part 1 was incomplete, part 1 had 60 years of story. Right. Part 2 is 5 years of story. It's one time zone. Part 1 had 5 different time zones. So one time zone, all characters have been introduced. Everything is right. There's 2 more characters that need to be introduced in part 2. Right. Which come in and perpendicular introduce होना है, शमशाद आलम introduce होना है। शमशाद, that is राजकुमार यादव। अब्बू ने सलाम बोला है, क्या डाला है? अब्बू ने कहा बच्चे को हेलो बोलना। हेलो बोलना। It can't get more filmy than that. Bollywood is a character in the film. No? Bollywood has been referenced in the film. Right. कि how Bollywood impacts our lives. The whole circle of Bollywood and why Bollywood plays such a major role in our films. And both point of views are there. All our protagonists and all our heroes are Bollywood fans. The villain is not a Bollywood fan. The villain hates Bollywood. Ramadhir Singh hates Bollywood. So you will see, there's a whole lot of Bollywood fans and one guy who hates Bollywood. ऐसा लोहा को काटता है, ऐसा चूतिया है तो चूतियों को मारेगा ना। लोहा के काटता है, शोले का डायलॉग है। लोहा लोहे को काटता है, शोले का डायलॉग in fact. And finally, will you say that Gangs of Wasseypur is like a turning point for you? Always the kind of films you wanted to make, and it'll give you much more opportunities to make the kind of films you want to make. I hope so. Gangs of Wasseypur will lead me to
Bomb Velvet, and Bomb Velvet should lead me to Doga. Right, and written dialogues for Talash. I have written additional All dialogues. the additional dialogues for Talash. Because काफ़ी तो किया था और फिर वो डॉन की शूटिंग में बिजी थे फरहान. And even that story which came out that Aamir is finally working with Anurag and Anurag was upset with Aamir earlier because of Bombay. यार मैं but I कौन think हूँ आमिर से अपसेट होने वाला it है was यार. something which was not in good taste. ना तो मैं किसी को रोक सकता हूँ लिखने से, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ. As long as Aamir and me are sorted and clear amongst each other, it doesn't matter what anybody writes. Fantastic. We can keep on talking to Anurag. There's lots more to talk, but I think some other time. So thank you very much for being on Bollywood Hungama, and great pleasure to just watch Gangs of Wasseypur Part 1 because I've been following your work for quite some time and I've always been critical that you should be coming up with a full-on entertainer, and this is looking like an entertainer in a very different context. जो आपकी principles हैं आपने compromise नहीं किया. That's the best part. And you've given a new idiom. You know, when you see the movie, it's a new idiom, entertaining, but at the same time, there's something which is very, very different. So, looking forward to the part 2 and all your future ventures as well. Thank you so much. That's all from Bollywood Hungama. Keep on watching.